आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत आज के धन्यवाद। मुख्य समाज इस वीडियो में बिल को लेकर साधारण बिल के संविधान अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। सरकार ने इस पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, उस पर बहस हो रहा है। पहले आइए सुनते हैं बिल के अपोजिट में ओवैसी ने क्या तर्क दे रहे हैं, और ओवैसी के बाद तमाम नेतागण भी अपना अपना तर्क दिए। पहले आइए सुनते हैं ओवैसी जी का। सर, तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है। सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, आप डिवीजन कराइए। स्वागत राय जी। Sir, with all the vehemence at my command, I beg to oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament, because the Supreme Court in a passed a judgment in CA number 2357 of 2017 on 11th May 2023 in the matter of government of NCT of Delhi versus Union of India. Now, to override the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates. सर, हो जाएगा सर। सर, आप प्रेमचंद्रन को 4 बार मौका दिया, मुझे भी 1-2 बार दीजिए। सर दादा बोलो। कंप्लीट। सर, I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the Union Capital Territory of Delhi under Article 239A of the Constitution. कल आपको पर्याप्त मौका दूंगा। चलाओ सदन, पूरा सबको मौका देंगे। अध्यक्ष, पूरा समय, कल आप सबको पूरा समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आपको भी पता है, पेज 772 ऑफ कॉलन शब्दर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता। आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता। ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, चाहता हूं सर, मुझे संरक्षण की आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है। और ये जो कॉल एंड शब्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, नो सब्सटेंटिव मोशन ऑन पॉलिसी मैटर इज टू बी ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Okay. It will be challenged and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive नहीं है। Thank you, sir. I too would like to oppose the introduction
under Rule 72 of the Rules of Procedure, and particularly on the issue of legislative competence, I have 4 brief points, sir. First, the bill violates the defining feature of a federal democracy, the division of power. It undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi government, and by trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the union government appears to undermine the constitutional principle of federalism. Number 2, sir, just 4 quick points. Sankshipt mein bol raha hu. Number 2, the bill infringes the principle of representative democracy, which is a basic feature of the Constitution. The legislators are accountable to their electorate. The electorate must have a say in who governs them. If the Delhi government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, sir, the fact is that it's their responsibility that the legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility, sir, of the government for its own officers. You cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect. I am before you, sir. I am before you. Sir, actually, the government is day by day going autocratic. That is what everybody feels here. Sir, ever since the first no confidence motion has brought in to this house in 1956, there is no such precedent to discuss any substantive motive before the discussion of. आप इस विषय में से बोलिए. Before the discussion of no confidence motion. पिनाकी मिश्रा जी. Moreover, it is very much against the judiciary, which the Supreme Court has already pronounced. Honorable पिनाकी मिश्रा जी. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. There are some very, very erudite members of parliament here who know the law well. I'm surprised that when legislative competence is being discussed under under Rule 72 proviso, that there is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order which the Supreme Court has passed, a speaking order of 7 pages the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Now, kindly see what the Supreme Court in para 95 has said. It concludes about legislative competence. Please understand, the court says, however, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to the extent as provided in that law. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? How do you I can understand you vote against it. You can vote against it. You can vote no. On a point of law. On a point of law. You cannot. On a point of law, you cannot challenge this. Legislative competence is there. ओके. माननीय गृह मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष जी, जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष, 239 क और 100 क के अंतर्गत इसमें स्पष्ट. एजेपी न्यूज देखें, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज. न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए एमएजेपी न्यूज कृत संकल्प है. आइए एक बार ज़रूर मिलिए एमएजेपी न्यूज और देखिए एमएजेपी न्यूज. देखते रहिए एमएजेपी न्यूज, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज. जय हिंद, भारत माता की जय. जय श्री राम. धन्यवाद. देखते रहिए एमएजेपी न्यूज, सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए एमएजेपी न्यूज. जय हिंद, भारत माता की जय. जय श्री राम.